जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा सुभद्रमयी जय सुदर्शना जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Rama Hare, loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Seek the blessings of all the assembled devotees. And we are actually speaking in front of the devotees and Srila Prabhupada in his Vigraha form. We are actually offering, like showing a lamp to the sun. सूरज को दीपक दिखाने से क्या होगा, ne? So whatever we speak is from the mercy of the spiritual master, and every devotee is representative of spiritual master. Har ek bhakta, to more or less degree depending on the purity. So we should worship. In fact, you are one of the authorities in Ramanujacharya Shiksha. So in Ramanujacharya, one of the things before he left his body, he spoke, he said, worship the other devotees as you would worship the Lord, something like this, to that effect. So respecting and honoring devotees, भक्तों का आदर करना और प्रेम करना वो भगवान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बाई चांस अगर भगवान का कोई निग्लेक्ट हो गया तो क्षमा हो जाता है, बट वैष्णव अपराध is very difficult to overcome. So, and generally the tendency is that we think this applies to very senior Vaishnavas like GBC, Sannyasi, Guru, or this devotee is not even initiated. What is your name? Om. His name is Om, but he's not initiated Om. He's another Om's law. Om. Like Om के तो कोई साधारण भक्त है, लेकिन we don't know, we may be exalted. कोई ज्यादा रिस्पेक्ट दिया तो कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं? Suppose I give more respect than somebody deserves, it is not offense, and it is not. What is the harm? Giving money, पैसा देना हम दे नहीं सकते. 10,000 है, हर एक डिवोटी को 1,000 दिया तो ओला का पैसा नहीं रहेगा. Money I cannot give indiscriminately, but respect is amani na manade. Actually, success in Krishna consciousness is so simple. One doesn't have to be scholar also. Be scholar, it's very nice. Just be humble, be kind, दयालु बनना, सहनशील बनना, सबको सेंसिटिव रहना, किसी का अपराध नहीं करना, मानसिक भी नहीं. We may not have that much love for every devotee, but at least we should not offend devotee. Yes, principle. So sensitive. Raghunath Das Goswami story we were hearing yesterday. Raghunath Das, it was Rupa Goswami. No? Rupa Goswami was witnessing the pastimes of the Lord. You know this story? Rupa Goswami Bhagwan ki leela dekh rahe the, and one very senior Vaishnav came and he offered his obeisance and pranam kiya. And Rupa Goswami was laughing for some other reason. But this devotee felt neglected. को लगा कि ये मेरा आदर नहीं कर रहे, या मतलब he's overlooked me or something. So that is also very sensitive, Rupa Goswami is Nitya Siddha. He is Rupa Manjari. Rupa Goswami Rupa Manjari है, लेकिन क्योंकि उनसे अनजाने में एक अपराध हो गया, भगवान की लीला दिखना बंद हो गई. कितना हमारे से कितने अपराध हो जाते हैं. मेरे से क्या अपराध होता है कि जो भी डिवोटी लेट आता है उसको मैं मन में डांटता हूँ. I cannot chastise verbally, but in my mind I become angry. That is also offense. Should be very careful. For the purpose of preaching, we may have to say, Prabhuji, please come on time. But internally we should know that he has come to hear about Krishna. ये कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आए हैं. आईफोन है, चल रहा कोई बात. He has come to hear about Krishna. Maybe we don't know the circumstance. Maybe just like I was coming, but something very urgent came. I was late also. So today I realized that others may be late because of some reason. We may have to say something, that please come, but some reason may be there. Like Mataji, she is one of my worshipful God sister.
She's always there, but so today she was about 2-3 minutes late, right? Due to late incoming flights, you know. So if I become angry in the mind also, that is offense, and I am the sufferer. अगर कोई मेरे प्रति अपराध करता है तो मैं अपराध करता. अभी Mataji has many times I have hosted, she has hosted programs, cooked for me, and just for one thing we become angry. That means we are not grateful. So small things like this, they are more important than bhakti vibhav and giving like nirjala upvas vrat, like whatever. Very sensitive devotee, you know. Even an ant should not feel hurt. Offense का मतलब खाली physical नहीं होता है. Anxiety, to cause anxiety to others. किसी के मन में anxiety पैदा करना. You know. So that's why Vaishnava etiquette is so important, sensitive. And devotees will feel very much happy that that is observed. Here, just like our Suvarna Gaur Hari Prabhu is a little unwell. He has kidney stone. He may have to be, hopefully it will get cured by medicine, but otherwise operated. So naturally our duty becomes to go and see, you know, what is the thing. Just show some love, some kindness. जब कोई डिवोटी को बुखार होता है, बीमार होता है, तो थोड़ा सा भी अटेंशन मिले उसको बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा सा भी निग्लेक्ट करे तो भी खराब लगता है. दोनों तरफ से देखना है. अगर हमारे साथ होता है तो वी शुड नॉट फील बैड, है ना. yesterday I was in another temple, तो हम लोग क्या हो कि एक वहाँ पे एक बड़ा रूम है, जीबीसी रूम है ना. दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट डजंट मैटर, आई एम टेलिंग ऑन यूट्यूब. तो जीबीसी रूम में क्या है कि बीच में बड़ा हॉल है और 3 छोटे रूम है. सबसे पहले मैं आ गया तो मैं राजा बन गया, है ना. फिर राधेश्याम प्रभु केम, so he took the other room, and already one more devotee before me, Radhapati Prabhu, was there. It became a little crowded thoda, and Banshivardhan Prabhu आए, you know, he is supposed to stay. The plan क्या था कि मैं जाऊंगा और वो आएंगे. कि मैंने बोला था मैं शाम को जाऊंगा लंच के बाद, और वो लंच के पहले आ गए. तो उसमें भी सेंसिटिव हो गया कि एक for me it doesn't matter, I stay outside, but he wanted some privacy. तो हमारे ऑर्गेनाइजर को थोड़ा डिफिकल्टी हो गया, ब्रज कृष्ण को क्या करें अभी. मेरे को बोल नहीं सकते आप जल्दी जाओ. पहली बात तो कार भी अरेंज नहीं कर रहे. कार इज कमिंग फ्रॉम ICC, so I cannot say come quickly, and you know the devotee is working. And so I said I will stay outside, no problem if he wants. But he says if you are staying outside he will not like. So what should I do? I cannot go, I cannot stay. So should I leave my body? अभी क्या करूं मैं रहूं तो भी खराब लगता है, मैं बाहर जाऊं तो भी खराब लगता है. So finally our Venkat Govind Prabhu, he had another room, so I shifted. So Vaishnava etiquette is very subtle, और उनकी भी गलती नहीं है. मैं होता तो मैं सोचता कि नहीं, this is if somebody is staying, I also stay. मेरे को for I don't need so much privacy. ब्रह्मचरी सी है, उनका कुछ का नेचर सेंसिटिव होता है, they want privacy. तो on one hand, when I need something, I should think even if I don't get it, it's all right. But if another needs something, we should think that yes, oh, let me observe the etiquette. तो ये बहुत मतलब सेंसिटिव प्रिंसिपल है. अमानी न मान देना. हम बोलेंगे प्रभु जी दूसरों को नम्र बनाने में, आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग हिम. Vanmali is my younger brother. In my heart, why should I show respect? If I show him respect, he'll become proud. So let me just chastise him so he remains humble. He will remain humble, but I will fall down. ड्यूटी बोल रहे थे प्रभु जी, अभी इस जन्म में आप गाय की हत्या करते हैं, तो गाय का मारा गया मतलब पूरे जन्म में उसने गाय ने कुछ किया होगा. आई एम ओनली गिविंग रिएक्शन व्हाट द काउ डिजर्व. नॉट गुड लॉजिक. अगर ऐसा हो भी तो भी आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना है. आई एम गिविंग, सपोज आई एम गिविंग सम डोनेशन, तो उस डिवोटी के भाग्य में था, उसको पोंगल मिलना ही था या खीर मिलना ही था. लेकिन अगर हम देते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट बन जाए, कैन वी गेट क्रेडिट. So we should not be insensitive in the name of being, you know, just unattached. So Prabhupada is sensitive. Prabhupada एक बार एक सेंटर में गए. सॉरी आई एम स्पीकिंग इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे, क्योंकि इस कुछ चीजें मैं बोलना चाहता था बट देयर वाज नो फोरम फॉर इट. नॉट पॉसिबल
possible to every time arrange. Bhagavatam is the only. Swarna Gauri Prabhu, just before you came, we spoke about you and we're praying for you. That you don't have to go through operation, just directly ठीक हो जाए. So, one lady, one माता जी, प्रभुपाद से मिलने आए. प्रभुपाद को बताया, प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. तो प्रभुपाद बोले आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए. प्रभुपाद जी एक सन्यासी और एक माता जी को बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करना है ना. कोई प्रभुपाद एज भी है, नॉट इक्वली. प्रभुपाद लाइक ग्रैंडफादर एज 75 एंड शी में 35. उसको बता रहे थे कैसे ख्याल रखना है और फिर क्या क्या करना है, कैसे रीडिंग चैंटिंग करना है. फिर बोले आपको रोज दूध पीना चाहिए. ड्रिंक 1 glass of milk because during the time of pregnancy the child receives nutrition. बच्चे को सब न्यूट्रिशन जो है माँ से मिलता है. और फिर वो फार्म कम्युनिटी से मिल्क मिलना भी आसान है. टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया प्रभुपाद. टेम्पल प्रेसिडेंट सरप्राइज सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम प्रभुपाद. तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न्यू प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन होगा, लाइक दैट. प्रभुपाद बोले आई हैव इंस्ट्रक्शन फॉर यू. बोले क्या? बोले एवरी डे यू अरेंज 1 glass मिल्क. टेम्पल प्रेसिडेंट शाह कह रहे मैं क्यों, किसी और को ही करेगा. said no, you should do. Said Prabhupada, yes, I will do. No, right now, get in front of me. अभी एक दूध लेके आओ. And he told the Mata, you drink this milk. It's not that the Mataji would have died without milk, but Prabhupada wanted to show some attention. थोड़ा सा attention. तो बहुत बहुत डिवोटीज के हार्ट में थे कि मैं क्यों ज्यादा आता हूँ इस टेम्पल में, क्योंकि हमारे डिवोटीज अनिरुद्ध सेवा प्रभु है और गुरुनानक गौर प्रभु है, नरहरि प्रभु, मनमाली प्रभु, स्वयं प्रकाश. तो थोड़ा बहुत सेंसिटिव नेचर. लास्ट टाइम मैं आया था तो रूम नंबर 1 खाली नहीं था. तो मैं थोड़ा सा, फिर मैं रूम नंबर 4 में गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा था. 2 में वेंटिलेशन नहीं था. 2.5 है स्वर्ण गौर प्रभु रूम विदाउट बाथरूम. गुड वेंटिलेशन बट नो. तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था. तो फिर इस बार आया तो अच्छा रूम मिल गया मैं इट वाज अवेलेबल. तो थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना पड़ता है गुस्सा मीन्स यू हैव टू टेल दैट यू नीड. यू शुड नॉट बी demanding, but at the same time a devotee has to sometimes speak in a very humble way that if this is possible. So devotees immediately when I requested तो they arranged. So थोड़ा सा ऐसा होता है जब कोई हमारे प्रति थोड़ा ध्यान देता है तो हमें अच्छा लगता है. We feel very good. And same way we should know that others also they are sensitive. Bible says do unto others as you would have them do unto you. आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो आपसे करें. हम कभी प्रीचिंग में जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई ऐसे हेल्प कर दे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, somebody helps you fill up the bag or distribute or he shows you nice spots, तो हम कितना कृतज्ञ फील करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिलेशन बाहर के डिवोटी से ज्यादा अच्छा हो जाता है और जिसके साथ रहते हैं उतना अच्छा नहीं हो पाता. दैट इज ऑल्सो टेंडेंसी. ब्रह्मचारी में कई बार थोड़ा झगड़ा हो जाता है और ब्रह्मचारी गृहस्थ जो हेल्प कर रहे हैं उससे अच्छा हो जाता है. ऑफ कोर्स दैट इज वी शुड मेंटेन न्यूट्रलिटी. न्यूट्रल मीन्स ऐसे नहीं कि कोई किसी भी आश्रम से हो, कोई किसी भी गुरु के डिसाइपल हो, कोई भी लैंग्वेज बैरियर हो. यहाँ पे मेजॉरिटी डिवोटी आर कन्नड़ा स्पीकिंग बट देयर आर मेनी लाइक रेवती रमन प्रभु इज नॉर्थ इंडियन, बट वी हैव गुड बॉन्डेज विद ईच अदर बिकॉज कृष्णा अंडरस्टैंड्स ऑल लैंग्वेज. कृष्णा को सब भाषा में, कृष्णा नोज द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स आल्सो. भक्ति रसामृत सिंधु बताया इट सेज लाइक दैट that even Krishna can understand animal language also. So he's so sensitive. The sensitivity is one part of Vaishnava etiquette also. तो रूप गोस्वामी लीला देख रहे थे और वो लीला देखना उनका बंद हो गया. He could not see, like switch off हो गया. Then he was thinking what happened. Then he asked the devotees, devotee से पूछा क्या हुआ? तो बोले कोई आए थे क्या? बोले शायद कोई आया था, ओल्ड डिवोटी के. You find out कैसे पता लगा? एक फीस्ट अरेंज करो और जो नहीं आएगा वो डिवोटी होगा. तो उनको बुलाया और फिर उनसे माफी मांगी. तुरंत स्क्रीन वापस ऑन हो गया. यूट्यूब लाइव हो गया.
The small things, Yeah. Because now this temple is also growing. अभी मंदिर बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, डिवोटीज भी बढ़ रहे हैं. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटा जब मंदिर होता है ज्यादा रिलेशन अच्छे होते. इवन राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी is famous for good relation, but that kind of relation we had in 1989 very difficult to have in 2024, 23, 24 years, 34 years, 35 years. Of course, we want to grow also. ऐसा नहीं है कि हम छोटा ही रहना चाहते हैं. We want more people to get intimacy maintain रहे. हर एक डिवोटी के वैल्यू को बहुत समझना. कल मैं डिस्कस कर रहा था और एक डिवोटी से राधापति प्रभु से कि कैसे पीपल ओवर प्रोजेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे यहाँ पे बिग प्रोजेक्ट है, कॉलेज प्रीचिंग प्रोजेक्ट है, नामहट्ट प्रोजेक्ट. बट इम्पोर्टेंट इज डिवोटीज बिल्डिंग हार्ट, टेम्पल इन द हार्ट. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट. और बाई चांस फैसिलिटी नहीं भी हो ना, डिवोटीज विल कम. When we started, it was very small. Now it has grown up. The Gopinath temple started, it was a playground for children. The temple room was where children would jump and dance. Orphanage. Below there was, नीचे वहाँ पे स्कूल था, टिंकरवेल स्कूल, और एक भोलास क्लासेस. Imagine walking through that area. फिर धीरे धीरे जो ऊपर वाला कमरा ऊपर वाला था वो, और ट्रस्टीज वर डिवोटीज, कृष्ण चंद्र प्रभु एंड धीनाथ जी प्रभु. तो इसलिए कुछ दे तो दिया. We got that land, but tenants cannot be vacated by the law of government. A tenant who has stayed for more than a few years, they're as good as owners, by law of Maharashtra. I think all over India, नहीं ऐसे. तो फिर अभी क्या करें, फिर ऊपर का कमरा दिया. तो प्ले ग्राउंड था बच्चों का, वो ऊपर उसको टेम्पल रूम बनाया. वन स्मॉल रूम, छोटा सा रूम था जो जहाँ पे महाराज स्टे करते थे, और कॉमन बाथरूम. इवन you have to walk from here to the new temple for going to nature school. यहाँ से लेके जाने गार्डन पास कर about 100 meters. महाराज भी. और फिर एक कमरा था, उसके 3 पार्टीशन किए, वुडन पार्टीशन, हर एक में 2-2 बेड डाले, 6 ब्रह्मचारी के लिए. राधा गोपीनाथ प्रभु, भक्ति रसामृत महाराज, गोविंद प्रभु, सनत कुमार प्रभु, another devotee with Satyavrat Prabhu and myself, Sanat Kumar Prabhu. तो कुछ फैसिलिटीज नहीं. फिर डिवोटीज और बढ़ गए, तो फिर क्या हुआ कि मतलब बेड उतने ही थे, कुछ लोग ऊपर सोते थे टेम्पल रूम में. और एक बेड जो है वैसा होता है, बेड ही लॉकर. बेड को ना ऐसे ऊपर करो तो नीचे सब सामान रखा. तो बाई चांस कभी कभी आप लेट रात को आए तो कोई और सोया होता था. तो प्रभु जी क्या हुआ, मेरे को चादर निकालना है. Very, very austere. One small room, half the size of this kitchen was kitchen room. और पेड कुक था, सुनील उसका नाम था. उसको 3,000 रुपये महीने कहते थे, कुकिंग करते थे. कुछ नहीं था. But presence of great person like राधानाथ महाराज made all the difference. उनका persistence था, personal care. मेरे को बोले आप एमटेक डिग्री करने के बाद यहाँ पे रहना है तो कौन रहेगा. मैं तो इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि अमेरिका देयर इज मोर नीड फॉर प्रीचिंग. बट महाराज का इतना पर्सनल केयर था, इतना हर एक डिवोटी के लिए. मतलब बेस्ट इज फैसिलिटीज एंड केयर, बोथ आर देयर. 4 ऑप्शन: फैसिलिटीज, केयर, फैसिलिटीज, नो केयर, नो फैसिलिटीज, केयर, नो फैसिलिटीज, नो केयर. ए बी बार ए बार, बूलन अलजेब्रा है ना. ये studied Swarna Gaur Prabhu, Boolean algebra. Your branch was computer science, na? Huh? Electronics, yes. Same mistake I also did. 5 years. Huh? Huh? Wrong correction, yeah. Actually, Loknath Maharaj was, I told yesterday in the class, day before yesterday, Loknath Maharaj was having the flight at the same time. The Pune airport पे हमारे एक डिवोटी है मैनेजर, डिवोटी ने बिबू प्रभु फ्रॉम आसाम, ही इज मेन मैनेजर. सो
Whenever you want to land or take off from Pune, you get royal treatment. During COVID time, when you enter city, you need COVID certificate. But प्रभु जी साथ में है तो बिना सर्टिफिकेट भी एंटर कर सकते. ऑफकोर्स था सर्टिफिकेट, लेकिन नहीं भी दिखाया तो भी. तो ही गॉट, आई कॉल्ड हिम कि मैं आ रहा हूँ. तो बोले बहुत अच्छा है, लोकनाथ महाराज भी आ रहे हैं. तो उनको कलकत्ता जाना था, मैं बैंगलोर जाना था. तो आए लोकनाथ महाराज को मैं 77 में मिला था, मेट प्रभुपाद. तो भाई इतना हमेशा मिलते रहते, लेकिन बड़े लोगों को इतना टाइम कहाँ होता है. यू मीट, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, लेक्चर सुन. इस बार 15 मिनट पर्सनली, क्योंकि उनका फ्लाइट था अभी, वो वेटिंग लाउंज है जो वीआईपी के लिए. पहले तो एक माता जी थे, आई डिड नॉट नो, तो मैंने उसको प्रसाद दिया. आई थॉट शी इज, मतलब ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होगा. तो पूछा तो शी टोल्ड शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओ वेरी गुड. मैंने पूछा कौन है, मैं आई एम मेंबर ऑफ इस्कॉन. क्या क्या बोल गए. बट एनीवे, बट बिफोर महाराज केम शी हैड टू गो, उसका फ्लाइट था. लोकनाथ महाराज आए तो उनको ही नो, उसमें तो थोड़ी बातचीत की. मैंने बोला महाराज यू मे नॉट रिमेंबर, बट 45 years बैक, 35 years बैक, जब आप यू वर इन जू में, मैं प्रभुपाद से मिलने आया था, प्रभुपाद के लेक्चर सुनता था. तो मेरे को लोकनाथ महाराज पूछते थे व्हाट क्लास यू आर स्टडीइंग, यू नो, ही हैज अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन अ वेरी, कौन सी शिक्षा, कौन सी क्लास में, लाइक दैट, इज मूव हिज हेड एंड I said I'm in 10th. 10th बोले okay. Finish your 10th and join बैलगाड़ी party, you know. 10th पूरा करके. So I was telling him that if I would have obeyed at that time, by now I would have been pure devotee. I would have saved 10 years. 77. I joined in 87. This was in 77. 10 साल बच जाते. But महाराज जी encourage किए, बोले नहीं, कृष्णा हैज प्लान फॉर एवरीबॉडी. हर एक के लिए प्लान होता है. मैं उस समय ज्वाइन करता तो मैं राधा गोपीनाथ टेम्पल में नहीं होता. ऑफ कोर्स यू वुड बी इन सम टेम्पल. कृष्ण का प्लान होता है हर एक जीवात्मा के. यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट प्लान. लाइक प्रभुपाद, गिरिराज महाराज, ही इज वन ऑफ माय शिक्षा गुरुस. गिरिराज महाराज जब भी अब इस बार पूना में आए थे तो बहुत एसोसिएशन मिला. फ्यू जनवरी फरवरी ही वाज इन पूना बिफोर गौरपुर. गिरिराज महाराज प्रभुपाद के ऊपर किताब लिख रहे हैं, राइटिंग वन बुक प्रभुपाद इन इंडिया, गोरखपुर. तो बता रहे थे कि प्रभुपाद वाज इन वन पंडाल प्रोग्राम गोरखपुर में, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था. Some devotees were saying we should go back to some other place. Some devotees were saying should be here. The Prabhupada smiled and said, you have your plan, I have my plan. But we have to see what is Krishna's plan. Krishna का plan क्या? Prabhupada would make plans, but he would not be attached to the plans. Prabhupada कभी आसक्त नहीं होते थे. हमारे श्यामानंद प्रभु, राधा गोपीनाथ के सीनियर ब्रह्मचारी, वो भी एक्चुअली आई फॉरगॉट हिज नेम, 6 में. श्यामानंद प्रभु बोलते हैं कि जब हम प्लान बनाते हैं तो कृष्ण गोलोक में बैठ के हंसते हैं. कृष्ण इज स्माइलिंग, मास्टर प्लान इज विद मी, व्हाट आर यू प्लानिंग. वी हैव टू सिंपली ओबे कृष्ण's प्लान. जस्ट बी हम्बल. दैट्स व्हाट आई, मतलब एक्चुअली द सक्सेस ऑफ ISKCON is dependent on this relationship. And we'll discuss a little bit about, before I go to Raghunath Das, whether और एक topic है स्नान यात्रा. And tomorrow is स्नान यात्रा. So here also after Bhagavatam or before? तो राधेश्याम प्रभु स्कीमिंग, राधेश्याम प्रभु जी आपको डिटेल में बताएंगे. 10 o'clock will be स्नान यात्रा समझे. 10. तो कल डिटेल में बताएंगे, मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो स्नान यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा, टुमारो इज ज्येष्ठ पूर्णिमा. तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव दिवस मानते हैं, यू नो, अपीयरेंस. कृष्ण का अपीयरेंस जन्माष्टमी है, तो ये स्नान पूर्णिमा को कैसे प्रकट दिन मानते हैं. द डे व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ अपीयर्ड, एंड ऑल्सो the day when Jagannath takes bath
पब्लिक बात वन डे अयर। भगवान जगन्नाथ को बाहर लेकर आते हैं। कहाँ पर लेकर आते हैं पता है आपको? एरिया क्या बोलते हैं? हाँ, योर फेवरेट प्लेस इन जगन्नाथपुरी? आनंद बाजार। Nobody forgets this place. आनंद बाजार है ना। आनंद बाजार में यू सीन दैट प्लेटफॉर्म इज देयर। जगन्नाथ को वहां पे लेके आते हैं। एंड इस बेद यू कैन सी इट फ्रॉम प्रैक्टिकली 1 or 2 kilometers अवे। स्नान यात्रा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार हो जाते हैं। एंड ही गोज इनटू अनवसर, दर्शन नहीं देते। ऑलमोस्ट 14 days लॉर्ड जगन्नाथ डज नॉट गिव दर्शन। फिर चैतन्य महाप्रभु सहन नहीं कर पाते, ही कैन नॉट टॉलरेट सेपरेशन, सो ही गोज टू अलालनाथ। अलालनाथ जाते हैं। वहां पर एक शिला है, यू सीन दैट स्लैब ऑफ स्टोन? अलालनाथ इतना ह्यूज, ऑलमोस्ट 3-4 feet लॉन्ग, एंड देयर आर मार्क्स चैतन्य महाप्रभु के घुटने के, हाथों के, सिर के। कभी कभी नॉन डिवोटी सोच सकते हैं कि काल्पनिक है, बट जस्ट थिंक हाउ इज इट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है किसी ने स्टोन को लेके उसमें चिजल लगा के किया। Who will do like this? It will not come out. There are so many places in भगवान के धाम में। इतने स्थान है जो उसको बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति प्रेरक है। भक्ति रसामृत में बताया गया। उदीपान, you heard this word? उदीपान, that they inspire one in love for God, just by seeing, सोचते ही। इसलिए मैं हर साल जगन्नाथ पुरी जाता हूँ। हर साल सोचता हूँ, डॉक्टर्स बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ, फिर भी जाता हूँ। so inspiring, Mahaprabhu's places. गौरा महाराज ये सब स्थाने कोरिल भ्रमण, से सब स्थाने हिरी भवामी प्रणय भगत। जहां जहां मेरे गौरंग महाप्रभु गए वहां मैं जाना चाहता हूँ, बट भगते संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। जगन्नाथपुरी तो प्राइम लोकेशन। Here also devotees some are coming for Rath Yatra. Really, this time not many. So, we may be having Rath Yatra here also, no? When is it? Oh, same day. Then we should be here. But 20th June, yes. Rath Yatra. So Lord Jagannath is not giving darshan. So Chaitanya Mahaprabhu is feeling, जनों को बहुत दुख लग रहा है, विरह लग रहा है। शून्यायतम जगत सर्व। और एक कहानी जो गौर गोविंद महाराज राधानाथ महाराज को बताते। एक बार राधानाथ महाराज जब न्यू वृंदावन में रहते थे 1980 अर्ली 80s, गौर गोविंद महाराज उस समय प्रभुपाद जाने के बाद इस्कॉन में बहुत डार्कनेस आ गया। प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन द आचार्य लीव्स देयर इज ऑलवेज डार्कनेस, कंफ्यूजन होता है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि प्रभुपाद डिड नॉट गिव एवरीथिंग। प्रभुपाद ने दिया है वो खाली न्यू कमर्स के लिए। दिस द नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ सो हमें पीपल स्टार्टेड गोइंग टू गौड़िया मठ और दूसरे संप्रदाय। सो गौर गोविंद महाराज ही टुक इट एज हिज मिशन टू इंस्पायर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पूरे दुनिया में जाके लोगों को बताना कि प्रभुपाद के बुक्स में ही सब कुछ है, beginning from neophyte till the most advanced, all knowledge is there, है ना। So he came to New Vrindavan also. राधानाथ महाराज उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया। और फिर उनका इवनिंग क्लास था, इवनिंग क्लास उन्होंने शुरू किया और फिर क्लास तो खत्म हो गया। फिर महाराज, दोनों महाराज कमरे में गए, राधानाथ महाराज कुछ पूछे और गौर गोविंद महाराज जगन्नाथ लीला बोलना शुरू किया। स्टार्टेड 9:30 नाइट में और मंगल आरती तक हो गया पूरा क्लास, शॉर्ट क्लास। I will not take that much time, but because I want to speak about Raghunath Das, but 5 minutes he told the story of how Lord Jagannath got this form, Jagannath. बहुत सारे reasons है। We know the story of रोहिणी, रोहिणी देवी कहानी बता रहे हैं, कृष्ण बलराम आर हियरिंग। बट और एक स्टोरी है जो गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि एक बार भगवान जब द्वारका में थे
तो दिन रात राधे राधे ललिते, राधे विशाखा, नंदा, यशोदा, सब याद, was crying in separation. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast removed. प्रभुपाद ने एक ग्लोरिफिकेशन लिखा अपने गुरु महाराज कि परम सत्य एक सेंशियंट, एक व्यक्ति है. God is a person, he is feeling. So Krishna also cries. Krishna cries for every being. Krishna is actually crying for you and me also. Krishna हम में से हर एक को बुलाना चाहते हैं. Like Gaur Govind Maharaj says, Lord Chaitanya wants to embrace you, but you are running away from his embrace. I was thinking in the japa today that actually that means Lord Chaitanya is not different from the holy name. भगवान चैतन्य को हरि नाम से अभिन्न है. तो वो मेरे को मिलने आ रहे हैं. When I am chanting, Krishna is coming to meet me, but I am running away. My mind is wandering. How much you have to hanker. So, Gaur Govind Maharaj told this story that Krishna was lamenting. The night could not sleep. And morning, Bhagwan उठे ही नहीं बहुत देर तक. तो बलराम जी, नारद मुनि और उद्धव आपस में मीटिंग करने लगे. How to pacify Krishna? How to make Krishna happy? एक डिवोटी का एक ही मेडिटेशन रहता है. What will please Krishna? It doesn't matter whether I have to go to hell or heaven. I want to please Krishna. If my staying in hell is pleasing to Krishna, that is more important than my going to Vaikuntha. Krishna should be happy. Krishna जैसे, इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं जब उनको गोलोक से भगवान ने भेजा, तो भगवान, तो प्रभुपाद बोले मैं नहीं जाना चाहता है. कौन जाना चाहेगा? नहीं. अभी देखो, मतलब भाई मेरे को जैसे यहाँ पे रूम है 1 नंबर, ईस्टर्न स्वयं प्रकाश प्रभु gave me स्पेशल रूम. तो who will suppose somebody says you give up this room, and वहाँ पे एक ना उधर थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर क्राउडेड एरिया में एक टॉयलेट खाली है. And room is not available, but toilet, big toilet is there. Who would like to go? You would like to go? But the material world is like toilet. The spiritual world छोड़ के, who would like to come here? So Prabhupada said, I don't want to go. But Krishna said, no, you go and write some books. I will help you. Just जाओ आप कुछ किताबें लिखो, कोई preaching कर. The pure devotee is willing to go to hell if what Krishna wants. Hell का मतलब ये नहीं है कि खाली जहाँ पे कुंभी पाक है, महारौरव है. Any place which is not favorable for Krishna consciousness is hellish. जहाँ पे कीर्तन नहीं हो रहा, या भगवान की कथा नहीं हो रही, या डिवोटीज नहीं है, वो hellish place है. प्रभुपाद ने क्या किया? हेल में भी वैकुंठ पैदा की. मैं ह्यूस्टन जा रहा था अमेरिका में. I was going for studies. श्रीधर महाराज was fundraising in charge. उनको मैंने बताया मेरे को स्कॉलरशिप मिली. I thought he will be very happy to hear that I'm going to America. I showed him, that. They said, no, don't go there. America means cow killing, woman hunting. मत जाओ, मांस भक्षण होता है. नहीं महाराज, you do not know. I have got scholarship. Manushyanam sahasreshva. It's very rare. Right? You may be knowing that they would, how many rare it is to get scholarship in America. People apply and IIT scholars also. मेरे को 5 में scholarship, not only scholarship plus $700 ऊपर, क्या बोलते हैं, stipend. I call it donation because I would give the money to the temple. Yes, तो मैंने बताया उनको. तो बोले ठीक है, go to some place where there is ISKCON temple. तो मैंने देखा 5 थे, मेरे इसमें से एक ही कॉलेज था, ह्यूस्टन. His Holiness Radhanath Maharaj is in Houston 2 days back. And Jabatak Maharaj and Radhanath Maharaj together in Dallas just 1 week back. So I was seeing the videos in Houston. So उन्होंने फिर ह्यूस्टन बताया, उसमें वहाँ पे एक कॉलेज है, राइस यूनिवर्सिटी.
राधानाथ महाराज बोलते कृष्णन प्रभु वाज अर्लियर इन राइस, नाउ इज इन चपाती. राइस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, राइस इज वन ऑफ द टॉप, not Ivy League, but it's a top, maybe little less, but not, but very high also comparative. तो वो दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है, आई नो द टेम्पल प्रेसिडेंट को कॉल किया उन्होंने, टेम्पल प्रेसिडेंट सुंदर गोपाल प्रभु को फोन किया उसे से कि वन स्टूडेंट इज कमिंग, allow him to stay. बस हो गया कॉल, और क्या. You get America free accommodation and prasad, what more do you need? और फिर एकोमोडेशन प्रसाद फ्री है, लेकिन 3 मिनट्स कॉल का पैसा मेरे से कलेक्ट किया उन्होंने, बिकॉज ही वाज फंड रेजिंग इंचार्ज, तो वेरी सेंसिटिव. बस 200 रुपीज फॉर 3 मिनट्स कॉल. 200 रुपीज 30 years बैक इज 20,000 रुपीज, नॉट 20,000 बट एटलीस्ट 10,000 तो हो गई. एवरीथिंग हैज चेंज. सो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स इज बिकॉज श्रीधर महाराज मेड दैट कॉल, माई लाइफ चेंज. श्रीधर महाराज भीमा प्रभु, ही इज बीबीटी इंचार्ज. नहीं तो मैं कहाँ होता अमेरिका में. गिवन अ चॉइस टू गो टू अमेरिका एंड नॉट हैव कृष्ण भक्ति और नॉट टू गो टू अमेरिका, आई वुड से आई वांट टू गो टू अमेरिका. इतना मेहनत से सीट मिला. अगर उस समय उन्होंने केयर नहीं किया होता, उनको क्या फर्क. ही डिड नॉट डू मेनी, ही डिड नॉट हैव टू लिफ्ट अप सम बोल्डर और जस्ट वन फोन कॉल, एंड दैट मेड सो मच डिफरेंस. So anyway, coming back to the story, this why I'm telling this also because Tamal Krishna Goswami Maharaj वो जीबीसी, वहाँ के जीबीसी थे, और उन्होंने उसी समय एक जगन्नाथ वल्लभ नाटक का किताब लिखा. जगन्नाथ वल्लभ नाटक किताब है रामानंद राय का, उनको उन्होंने उसके ऊपर ड्रामा किया. You have seen one book by Tamal Krishna Maharaj, Jagannath Vallabh. So Gaur Govind Maharaj tells the story. Krishna was lamenting, crying. Narad Muni, Uddhava and Balaram. What should we do? Krishna has to be happy. कृष्ण को कैसे खुश किया जाए. कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे, बिकॉज कृष्ण का घर वृंदावन. कृष्ण इस वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छेत. कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते. बट अब कृष्ण वृंदावन अभी नहीं जाना चाहिए. because the Brajavasis, they were lamenting. They were like almost like half dead, मरे के जैसे. Their body had become weak and they were very morose, बहुत दुखी थे. अभी हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा इतना लेवल नहीं है. What does separation mean? A devotee who is in love with Krishna, he can understand separation. Separation जो है वो विरह जो प्रेम है वो मिलन से भी ज्यादा है. इसलिए चैतन्य महाप्रभु he stayed in Jagannath Puri for almost 18 years. 24 years totally, but out of that 6 years he was traveling. 6 साल ट्रेवलिंग, 18 साल वहां रहे. 18 में से भी 6 साल वो डिवोटी से मिक्स होते थे और लास्ट 12 साल एकदम अकेले रहते. And constantly Mahaprabhu, Jagannath says, he would rub his mouth, face against the wall in separation. Anybody has seen that room, Gambhira? Gambhira room देखा आपने? Where the foot Mahaprabhu के जूते हैं. That is not the real Gambhira. That room is Gambhira, but the actual place is down. How do you know? Last 2018, there was a yatra by His Holiness Radhanath Maharaj in Puri. Puri में था. You were there? जगन्नाथ पुरी. तो उसमें क्या हुआ कि यात्रा के एंड में महाराज गंभीरा जा रहे थे. तो मैं भी महाराज के कार में था. तो जो वहाँ के इंचार्ज है कृष्ण गोपाल प्रभु, इंचार्ज ऑफ द गंभीरा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको हम अंदर दिखाते हैं. वो एक दरवाजा लॉक्ड रहता है साइड से, तो वहां से अंदर गए और मतलब महाराज को जाना था, लेकिन एक डॉग भी चला गया, मैं भी चला गया अंदर. They went inside. तो उसने एक जगह दिखाई,
बोले यहाँ एक्चुअली जगह है जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठते थे। फिर उसने लाइट ऑफ किए, बोले महाराज को आप मेडिटेट करो, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, प्योर डिवोटीज कैन सी। तो महाराज आंखें बंद करके बैठे। अब मैं महाराज के सामने ही था, मतलब जगह इतनी छोटी थी, एंड अभी आंखें बंद करके बैठना मेरे को एक्सपीरियंस तो मैं तो सोच रहा था क्योंकि 8 बज गए, जनरली ब्रेकफास्ट गेट्स ओवर बाय 8:30 है ना। तो माय माइंड वाज मेडिटेटिंग, यू नो, मे बी आई शुड कॉल समबडी, मेक अ प्लेट, और यही मेरा मेडिटेशन चल रहा था। व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड, मेरे को लीला समझ में नहीं आ रहा। 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स तक। फिर उसने लाइट ऑन किए, महाराज को बोला व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस किया। महाराज बोले एक्सपीरियंस विच आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ, ब्लिसफुल। से बोले ये प्योर डिवोटी है, दे कैन सी द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, विटनेस लाइक। मायापुर में द स्टोरी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब जा रहे थे तो कभी पुकारते ए चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, वो ऐसे महात्माओं को देखते थे। अद्यापि लीला करे गौर राय, कोन कोन भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान की लीला अभी भी हो रही। हियरिंग इज ऑल्सो विटनेसिंग। ओनली थिंग इज एक श्रवण करने से भी देखने का लाभ मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, कोई इंडिकेटर नहीं है। अगर ऐसा होता ना हमारे बॉडी में इंडिकेटर होता है कि कितना भक्ति में आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा होता है। नहीं, जैसे भी एक लेक्चर अटेंड किया, 2% ऊपर गया, वैष्णव अपराध किया 10 डाउन गया है ना, फास्टिंग किया 15 बढ़ गया है ना, पिज्जा खाया 1 नीचे चल गया। ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए नहीं। बट एनीवे, if that was better, Krishna would have done it. How can I tell? but we can make out from our own experience also that जब ऐसे अभी निर्जला उपवास किया उस दिन, लेकिन बॉडी वीक हो गया, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, स्पिरिचुअली सो नरिशिंग टिल द नेक्स्ट डे, है ना। तो व्हेन वी आर समटाइम्स, जो गृहस्थ डिवोटीज को कोई सोशल के लिए पार्टीज में जाना पड़ता है, वेडिंग्स में, तो नेचुरली कॉन्शियसनेस बहुत डाउन हो जाता है। इवन ब्रह्मचारी के प्रीचिंग में जाते हैं ऐसे एरियाज में, वी गेट अफेक्टेड। हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे एरिया में जाने पे भी हम प्रभावित नहीं हो। आवर लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी मोर देन देयर लेवल ऑफ माया। जैसे अभी कोई आप स्टेशन पे हैं, यू आर ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड समबडी इज ट्राइंग टू क्रॉस, वो क्रॉस करने जा रहे हैं और सामने ट्रेन आ गई और आपको बोल रहे हेल्प हेल्प, मदद करो, तो आप उसको खींच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका वजन ज्यादा होना चाहिए। समझो आप 53 है मेरी तरह और नीचे 112 है, तो दोनों ही निताई गौर प्रेमानंद है। The devotees, when we go out preaching, you have to be very strong not to get affected. We will get affected, but at least it should not get affected to such degree that we lose our path. थोड़ा थोड़ा इधर उधर मन भागेगा, but again pull it. Finally, devotees ने प्लान बनाया कि कृष्ण को वृंदावन ले जाना है, लेकिन उस समय ले जाना है जब ब्रजवासी सब अच्छे मूड में हो। We want to take Krishna when all the Brajas are very happy. And what can make Brajavasis happy? What news? क्या समाचार सुन के ब्रजवासी बहुत खुश हो जाएंगे? Krishna is coming. Krishna is coming. Like there's one book called Prabhupada is coming. आपने पढ़ा? Prabhupada is coming. I don't remember. I think there's one Mataji Mahamaya Devi Dasi, you know, Prabhupada disciple. उन्होंने भी एक किताब लिखा है प्रभुपाद का. So many books, but one book I don't remember the author. प्रभुपाद is coming. कई बार इस्कॉन में होता था प्रभुपाद कमिंग, पता चला सब डिवोटीज वहां पे आ जाते. कई बार ऐसा होता प्रभुपाद कैंसिल भी होता था. Many times Prabhupada would cancel because. So they devised a plan that one person should go and give a message that Krishna is coming. कोई आगे जाके फिर ब्रजवासी बहुत jubilant, they will very happy, joyful, and then Krishna will go and he come back. Krishna ऐसे गए without message, तो फिर जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे. We want Krishna to go, but we don't want to lose Krishna. We want Krishna to go with a return ticket. है ना, तो कृष्ण को जाना भी आना भी है, तो क्या किया जाए? They made a plan that somebody should go ahead and give the news.
Krishna is coming, Krishna is coming. Krishna आ रहे हैं. Narad Muni, Balaram and Uddhava, they are deciding. This is क्या बोले DMC, Dwarka Management Committee, है ना. Meeting Dwarka में हो रही है. Outside Krishna's room. Krishna has not got up. Sunrise. Krishna उठे ही नहीं. But he's completely in ecstatic state. So then Narad Muni told first whom to go? Uddhava. Uddhava, you should go. Uddhava, आप जाओ, कृष्णा का मैसेज दो. क्यों? उद्धव जो है बहुत दिखने में कृष्ण जैसे थे. बॉडीली कॉम्प्लेक्शन, ड्रेस, बिहेवियर, डिमीनर, व्यवहार पूरा कृष्ण की तरह था. So you should go. Uddhava said, I just went few months back. मैं गया था वहां पर और जब गोपियों को देखा, एक्चुअली मैं प्रवचन देने गया था. I went to give a seminar. You know what is how Krishna is present everywhere as Paramatma. But when I thought their intensity of their love, उनकी गहराई, how they were weeping, Krishna, Prannath Krishna, looking at the trees, remembering Krishna. Krishna used to walk. Here Krishna danced on Kaliya. यहाँ पर कृष्ण खेलते थे, यहाँ गोवर्धन उठाया था. This is called लीला स्मरण also. ये भी बहुत helpful है कभी कभी. Devotee is constantly thinking of Krishna, separation. During Ras Leela, when Krishna left the Ras arena, Krishna Ras Leela छोड़ के गए, तो गोपियां सब ऐसे ही करते थे. पेड़ों से पूछ रहे थे, Have you seen Krishna? नंद महाराज के बेटे यहाँ से गए. Oh Malika, oh Yuthi, trees you have seen? ये ट्रीज मेल ट्रीज है, ये नहीं सुनेंगे. फीमेल ट्रीज, तुलसी से पूछते, कृष्ण को देखा. लेट अस आस्क द डियर, कृष्ण दिखाई पड़े क्या? नंदन नंदन कृष्ण यहाँ से गुजरे. प्रॉपर राइट्स एक्चुअली वी शुड कल्टीवेट फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन. कल्टीवेट कैसे करना है? ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियली, बाय हियरिंग. कृष्ण लीला रोज पढ़नी चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट कृष्णा बुक एट योर होम? हाउ मेनी ऑफ यू ओपन इट एवरी डे? Even I am not able to, or at least Chaitanya, one book at least we should open every day. Open means read also. Devotees may just keep in the cupboard one open book, you know. And if they open the ice cream box means you should eat it. This ICC temple is one of the most important temple, cultural, not just a temple, cultural center. Culture comes from books. Culture कहाँ से आएगा? Proper books से ही आएगा. They should be, this temple should be known for devotees who are strong in sadhana and reading. Two things are important in sadhana: reading Prabhupada books and chanting japa. Chanting japa तो already masters हैं. मैं सब जहाँ भी Zoom group में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे निर्जला में more than 50 devotees participated. And my request, I request Anirudh Prabhu that Saturday, Sunday, whoever is free, जैसे आज Saturday है, so let's say 9:30 class will end, breakfast हो जाएगा. 10 o'clock again we can chant more. Those who are having free time. जैसे अगर business में होता है, how many of you are businessmen? Anybody is businessman here? Somebody working? Suppose business, हाँ, working, yes. Suppose आपको बोला जाए कि आपको 6 घंटे में you are earning, let's say in 6 hours you are earning 3,000 rupees. बाई चांस बोला जाए 2 घंटे और करोगे तो another 10,000 मिलेगा. You know, ओवर टाइम में होता है. So like to work if possible. जैसे डिवोटी को सोचना चाहिए कि 16 माला हो गए, that is I have just taken a bare minimum, but why not get a bonus whenever possible? Hankering. That hankering for Krishna is a sign of love. Like Ashok Gaur Prabhu's example, I remember him. Jagannath Puri Yatra, you know. रोज मेरे साथ थे, बहुत समय जप करते. In fact, I think we did once 64 rounds in your complex, na? Huh? Neminath Prabhu, yes. Today I have to go to Whitefield Center. Tomorrow there are 3 programs. वहाँ भी हरिक्षेत्र प्रभु भी is like नमो महावदन्य आया. I requested 1 program, 3 program दे दे. मैंने बोला अभी थोड़ा कम करो. 8 o'clock students class, 9:30 congregation, 12:30 newcomers. मैंने what about me? Give time for me also. Then again tomorrow evening our Venkat Raman Prabhu's place.
yesterday. He's here, I think. Yes, I'm very grateful to him. And just a small message, he came, with his vehicle to pick me up and sharing some things which he was telling me that how he's inspired by my joining and by my sincerely chanting. Appreciate कर रहे थे मेरे को कि आप chanting करते हैं बहुत अच्छा लगता है. Even senior devotees need some appreciation because we are all sensitive. We are not on that level ki somebody just criticizes you, then still you will come. Of course, we should be like that, but at our stage, little appreciation. I appreciate all of you that you are hearing. We appreciate devotees who are cooking. Appreciation is needed, not just in the mind. Somebody you just say, oh, in the mind I express. But we are not Paramatma, we should express also. Like Prabhuji played a very important role in Dharwad Yatra. You were one of the managers, right? So we appreciate that. So the credit goes to the people praise the preacher, but actually the party managing also is part of the show. So tomorrow evening we will, because today I'm kind of, touching a few topics here and there, but tomorrow I'll try to be more focused. Then, so why I feel like this to come more often when there is some love and some reciprocation. So finally, Uddhava said, I cannot go. Because when I saw the gopis were crying for Krishna, the material world, if somebody cries, what would you do? कोई रो रहा होता है तो हम बोलते हैं क्या रो रहे हो? हमारे पिताजी चले गए. कोई बात नहीं, शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं होती. Somebody is crying, he said, soul is never dying. Or somebody cries because he lost his laptop, Apple laptop. There are two types of laptop, Apple laptop and banana laptop. Simple laptop is like simple, One thing is the material world, whatever things are more expensive, they cause more distress also. The phone gets lost, 10, 15,000, no loss. But somebody gave me an iPhone, which I'm using now. The iPhone gets lost, then you are really lost. You remember last year I gave you this for filling data, it is still there. I gave it to 3 devotees because I cannot use, but they all gave me back that we also cannot use. It creates fear in the mind also. So if I lose an Apple laptop, people say, you will get a new one. Naya mil sakta hai. But if somebody is crying for Krishna, what do you tell him? Cry, cry, cry more. Cry for Krishna. It's perfection of life. Krishna ke liye Raudhya Manam. Gaur Govind Maharaj explains very deeply. Krishna is, Jagannath Puri is a place of crying. Krishna is crying for Radha. Radha is crying for Krishna. This Jagannath form is Krishna is crying for Radha. It is separation. That's why Lord Chaitanya spent so much time here, more than 12 years in separation. Vipralamba Kshetra. Sambhoga Vipralamba. Jagannath Puri Vipralamba Kshetra. After preaching for so many years, then Lord Chaitanya came to Jagannath Puri, at highest stage. We should not judge holy place by convenience or facilities. No, this place is very good because 3 times Pongal is available. There is too much hot weather. Just like I also, maybe ऐसे condition होता हूँ, रथ यात्रा अगर जाना है कि नहीं अभी सोच रहा हूँ. It's too hot. Just now I saw the temperature. Jagannath Puri is 40 degrees and it feels like 51. They put a star, feels. I was thinking, do not go. But another devotee is traveling with me, our Ramai Pandit Prabhu, Pradeep Prabhu's father-in-law. He said, you have to serve Krishna. Going to Dham is also a form of service. कई बार हम क्या सोचते हैं कि धाम यात्रा में जाना इंद्रिय तृप्ति है. अभी 2 डिवोटीज में से एक जा सकते हैं, प्रभु जी आप जाओ, मैं सेवा करूंगा, आप एंजॉय करो. But Dham is also not for enjoyment. Service in Dham is to hear about the glory of Dham. Do some service for the Dham Vasis. See Lord Jagannath. Just be inspired by the. हम उड़ीसा के स्त्रियों को देखते हैं, बूढ़े स्त्री, बूढ़े प्रभु जी, वो भी कितना उत्साह होते हैं, रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं. जब जगन्नाथ बाहर आते हैं तो इवनिंग टाइम ऑफरिंग लैम्प्स, सो मच लाइन, कितना भीड़ होती है जगन्नाथ के लिए.
एक बार तो मैंने ऐसे यूज किया, जगन्नाथपुरी में जब दर्शन के लिए जाते हैं ना, जब एक दिन पहले दर्शन खुलता है, दैट इज कॉल्ड नयन नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव। तो उसमें क्या होता है, एक लाइन से छोड़ के सबको बाहर करते हैं, बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे बूढ़े लोगों को अलाउ करते हैं। मैंने एक बार ट्रिक किया, यूज किया, वहां पे गया, वहां पे बैठने नहीं देते, लेकिन कुछ बैठे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने क्या कि वहां बैठ गया और एक एक उड़िया गीता सामने रख दिया। अभी कोई पंडा आएगा तो लाइक कोई कोई पुलिस वाला आएगा, वो मैं पढ़ता और मैं हरे कृष्ण बोलते जा रहा है। बाद में एक व्यक्ति आया, बोला क्या पढ़ रहे हो, मैंने ऐसे दिखाया उसको। So I could sit for 3 hours. That central area is there. Where they allow only for some, they allow old people generally or those who have some physical problems. मैं सोच रहा था कि अगर प्रॉब्लम्स होने ज्यादा दर्शन होते तो प्रॉब्लम्स होना ही अच्छा है। लॉर्ड जगन, that story of that old lady, she wanted to have darshan. एक बूढ़े स्त्री थे, उनको दर्शन ठीक से नहीं हो रहा था, तो उसने एक पैर चैतन्य महाप्रभु पे रखा और एक पैर गरुड़ जी पे रखा, एंड लॉर्ड चैतन्य वाज वर्शिपिंग दैट माता जी। अहो वंदो इहार पाए, I worship her lotus feet. So Uddhava is saying like this, I worship the gopis. I want to take their dust, but because they will not give dust, वे धूल तो देगा नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, I will become a blade of grass, गुलमलत. Uddhav said, I cannot go again. I came and reported to Krishna the problems that gopis are feeling separation. Please go, आप जाइए जाइए. कृष्ण गए नहीं. अब मैं फिर से गोपियों को फॉल्स प्रॉमिस दूंगा तो कौन विश्वास करेगा, है ना. जैसे सेइंग इन मराठी, वाघ आला, शेर आया, शेर आया, शेर, सेकंड टाइम शेर आया, शेर आया, तीसरी बार शेर आ भी गया तो भरोसा नहीं करे. तो नारद मुनि सेड, ऑल राइट बलराम जी, यू गो, यू आर ब्रदर ऑफ कृष्णा, आप कृष्ण के भाई हो, आप जाओ. बलराम जी बोले, मैं भी अभी होके आया. I stayed for 2 months. Chaitra, the Balram Ras Purnima आता है, राम घाट, जब बलराम जी ने वो यमुना को, like we have bulldozer or JCB machine, huh? JCB machine, JCB or GBC, I don't know what it is. And here you find that whole city, Balram becomes angry. And this is another story that when Samba and Lakshmana, Balram ji is very merciful but also very angry. But Lord Nityananda is never angry. He is akarodha. बलराम सकरोध है, लक्ष्मण को भी गुस्सा आता है, बलराम को भी गुस्सा आता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु अकरोध परमानंद. कभी सुना नित्यानंद प्रभु गुस्से हुए? नहीं कभी. मार खाए प्रेम दे. कल वो डिस्कस कर रहे थे कि काल कृष्णदास एंड छोटा हरिदास बोथ कमिटेड सिमिलर ऑफेंस, सिमिलर गलती की. काल कृष्णदास को एक्सक्यूज कर दिया नित्यानंद, छोटा हरिदास सुसाइड कर दिया. Kala Krishna is associate of Lord Nityananda and Chota Haridas is associate of Chaitanya Mahaprabhu. Of course, he also went back to Godhead. It's not that he suffered, because that was plan of the Lord. Bhagwan sikhana chahte. So different devotees, different lessons we can learn. So finally, Balram said, मैं भी नहीं जा सकता. तो who volunteered? Subhadra. सुभद्रा बोली, मैं जाऊंगी, आई विल गो. क्योंकि पुरुष टेढ़े होते हैं, स्त्रियां सरल होते हैं. कहानी में ऐसा बोला है. एक्चुअली दोनों स्त्री और पुरुष सरल होते हैं अगर वैष्णव है, नहीं तो टेढ़े होते हैं. वैष्णव में सिंप्लिसिटी, टेम्पल लाइफ में सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया पैसे के पीछे, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, इधर का उधर करना, ये सब चलता है. हम टेम्पल में भी यही करेंगे तो फिर क्या फायदा. Our temple should be completely spotlessly free from all duplicity. The temple clean hota hai. See, we see this temple is cleaned every day. So more than this temple cleanliness, the heart cleanliness. We have some grievance, discuss. मैं देख रहा था यहाँ पे अच्छा बोर्ड लगा है, grievances, child grievance, men grievance, women. Ultimately, you can go to president, whatever. Problems will be there, but we should not find fault, politicize. Just इतना एटमोस्फियर स्पिरिचुअल होना है.
Devotees come because of spiritual atmosphere, nourishment. With how so many, almost 40-50 devotees today for Bhagavatam class. And practically any day, even weekday also, 10, 15, 20 devotees come. Because people like to hear. Maintaining purity is most important and most difficult also. कितने सारे temples हैं इंडिया में, तो कितने सारे temples हैं पुजारी ही नहीं है. They don't have instrument. They just put one button and dum play Shiro. Birla Mandir. After some years, there'll be a robotic pujari, And prasad will come out. One laddu will come out and. You've seen those videos of the COVID time? China videos. China में जो COVID patients को कैसे होता है ना, रोबो जाता है, एक प्लेट भोजन खाता है, दरवाजा खुलता है. Then, so we don't want that kind of. India has so many temples. South India, so many temples are neglected, because of lack of Shri Sampradaya also. For Shri Sampradaya taking a good job, but there are which are not cared because of lack of manpower. So personal, when Subhadra says, I will go, and the plan is, first Balram ji pehle jayenge, फिर सुभद्रा जाएगी और सुभद्रा न्यूज देगी, कृष्णा इज कमिंग, कृष्णा इज कमिंग. तो और फिर उसके बाद में नारद मुनि कुछ गीत गाएंगे कृष्ण लीला के. वो गीत सुन के कृष्ण जागृत होंगे. तो पहले बलराम जी गए, एंड बलराम, दैट्स व्हाई रथ यात्रा में पहले बलराम जी का रथ आता, पहंडी फेस्टिवल, डुम 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 डुम. Balaram comes out like he's like swaying like a maddened elephant. भगवान बलराम जगन्नाथ, you've seen पहंडी ना, जगन्नाथ बाहर आते हैं. You've never seen? Anybody has seen पहंडी? भगवान जगन्नाथ बाहर, easily would go and sit near the kitchen area. Jagannath ji बाहर आते हैं. He's not like an obedient soldier who has to go and salute his boss. He is the Lord himself. So he's swaying. Sometimes he falls. He's down for 5 minutes. पुजारी उठाते हैं, लकड़ी से मारते, उठो बाबा, इतने लोग वेट कर रहे हैं. And Jagannath is watching everybody. Jagannath ki leela achinte. His eyes everywhere. Sarvato pani padam, sarvato shutimal loke. Everywhere are his eyes. Like that's why Jagannath ka form kya sikhate? He has no hands, but actually he has got hands everywhere. He can accept of. It's one of the reasons why Lord shows this Jagannath form. So Balaram ji is coming. Actually, before Balaram, Sudarshan comes. Then Balaram ji aate hain, to he's just, when he comes to see, the Brajavasis are completely, almost lifeless. कोई प्राण ही नहीं है उनके. बलराम जी देख के एकदम, his eyes become big and his hands go inside, हाथ अंदर जाते. That seems the form of Dauji. There's a story when Lord Nityananda came to Jagannath Puri, you know that? लॉर्ड नित्यानंद जगन्नाथ पुरी आए, दर्शन करने गए. अब पुजारी ने रोकने का प्रयास किया. अब बलराम जी के एक हाथ आगे आया और पुजारी ने, सॉरी गार्ड था, और गार्ड को बाहर भेजा. निताई गौर प्रेमानंद. लगता है भगवान जगन्नाथ को उड़ा के फेंकने में बहुत होशियार है. You know that Ramanacharya was slapped also. He got a non-stop flight. Kurma Chitra doesn't have airport also, but he got a point-to-point service. यहाँ तो airport is about 45 kilometers and security check, and but if you have Jagannath's mercy, you can go WT without ticket from here to Puri. Because I'm planning to go on 14th. 14th is Ekadashi actually, this time. Again, we will try this Ekadashi also. We can just pass a message. We don't have, and whoever stays, we can give them some lunch prasad. Possible, nahi? Swayam Prakash Prabhu, Swan Gaurav Prabhu. Whoever, there are not many, 10, 15 devotees. Of course, if there are many, very good. Ekadashi, they said that chanting on Ekadashi is many thousand times more benefit. Chant in front of the deities of the Lord. We should not differentiate. One sense तो हमें लगना चाहिए कि yes, पूरी में जाना अच्छा है, लेकिन जहां भी आप जगन्नाथ है वो भी पूरी है. Both understanding are perfect. According to what the Lord is asking. The Lord wants your service here, then this is पूरी. भगवान जगन्नाथ बोलते हैं वहां आओ, तो वो भी पूरी.
हेल्थ अगर अलाउ करता निर्जला करना चाहिए, उस दिन मैं भी नहीं कर पाया. So that is, we should think Krishna did like this to humble my pride. I was telling him I'm doing Nirjal for last 10 years. The Krishna kicked me. See, you cannot do without my power. मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते. So Lord Balaram ji came and he became like this form. Then Subhadra Devi आए. Subhadra Devi भी वो भूल गए मैसेज पास करना. इन्हें टाइप करके रखा था, खाली क्लिक करना था. व्हाट्सएप सेंड ही प्रेस नहीं किया. And she also became astounded, completely stunned, almost like a murti. Could not speak, could not see, could not move. And Narad Muni was thinking, the message has gone. उस जमाने में व्हाट्सएप होता तो डबल ब्लू हो जाता है ना. But Narad Muni started singing, जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन गोविंद गोपीनाथ श्याम कुंड. Soon as Krishna heard these songs, because I'm just assuming this is one of the songs, Narad Muni knows, innumerable song. I have one devotee named Pushyakrita Prabhu, he was known as Crazy Peter. He was somewhat eccentric, Prabhupada disciple. You have heard this story? He wrote before he left his body, I was serving him, not very intimately, but as a translator. He wrote one book called Songs of Radharani, Vrindavan, 200 songs, English. How a devotee can be empowered. And he's a person who is mentally abnormal, but spiritually normal. So Narad Muni knows how many songs he was singing. And Krishna got up. Krishna would go, Vrindavan, Vrindavan, Krishna, where is my flute? Narad Muni said, the flute is coming. Radharani is waiting for you. The red chariot is ready. आपके लिए रथ तैयार है. आप जाइए. Vrindavan, Vrindavan. And Krishna sat on the royal chariot. Krishna जब आए, the last generally you find रथ यात्रा में जगन्नाथ रथ पे ज्यादा भीड़ होती है, नहीं? More crowded. When the last rath comes, it's be very careful because sometimes there may be danger of stampede also. Once it happened to me in Rath Yatra and I was almost fallen, but one devotee in Hyderabad picked me up and took me out. So nowadays I don't go very close to Jagannath Rath because coming to age. But it's very inspiring to see devotees' enthusiasm. कभी कभी पूरी में लोग 6-6 घंटे बाहर वेट करते हैं जगन्नाथ के बाहर आने के लिए. Their balconies, they pay 2,000 rupees just to have view of Jagannath. So when Jagannath comes, he is also taken aback. He's saying Radha, Nandamaba, Yashoda, Shidama, Madhumangal, life and soul. Jaya Jaya Vrindavana Vasiyat. One of the name of Krishna is Brajavasi Pran. He is the life of the Brajavasis and the Brajavasis are his life. Krishna says that actually among all the devotees, Brajavasis are most dear. Sabse zyada priya Brajavasi. Taramade Gopi Ganam. Among that Brajavasis, Gopis are most dear. And among all the Gopis, the Radharani is the most. Radharani. So Krishna when he sees, जब भक्तों को देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम स्तब्ध हो जाते हैं. He assumed that Mahabhava, this form of Jagannath is Mahabhava stage. He is just completely astounded, completely stunned. Sometime there is no exchange and finally, because Radharani be ecstatic internal consciousness, एक हवा चलती है by the arrangement of the Lord. एक हवा चल के राधारानी को स्पर्श करती.
Radha Rani comes back to external consciousness. Radha Rani देख रही है प्राणनाथ कृष्ण, meeting Krishna, but after 50 years or so, 50 साल के बाद, और एकदम आश्चर्यचकित है श्रीमती राधा रानी. अब वो सोच रहे कृष्ण मेरे प्रेम में विरह में. ललिता, ललित, प्लीज गेट अप, ललिता, ललिता जाओ कृष्ण को होश में लेके आओ. हाउ टू गेट अप कृष्ण बैक इन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस. आपको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस तो क्या बोलना होगा? महाप्रसाद गोविंद है. दिस इज वन वेरी पॉपुलर मंत्र इन इस्कॉन. एक ड्यूटी का तो मैंने देखा उसका अलार्म क्लॉक में लगा रखा. मोबाइल में नहीं, पुट महाप्रसाद है, immediately नींद खुले. And one other devotee, Navayogendra Maharaj has one mantra. He's put, get up, क्या? Get up, rascal, something like. Prabhupada का quotation से, whatever works. so when she goes, and for Krishna, what will work is, Krishna कैसे होश में आएंगे? When he hears the name of Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe Radhe. So immediately Radha Rani का नाम सुन के कृष्ण में एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते. He just come back and he's so happy to see Srimati Radha. I just described in very improper way, in a very incomplete way, whatever little I remember. But the story is very, I'm sure Adeshambru will describe in more detail tomorrow. But there are many stories of Snan Yatra. We have just 5-10 minutes more. But Raghunath Das Goswami had promised Anuruddha Seva Prabhu. There are some sections of yesterday. कल के कुछ श्लोका हमने पढ़े थे. We read till completed. And there's one chapter where one verse, one section where Chaitanya Mahaprabhu is telling what is the duty of the person in renounced order. I spoke it, but we did not read it. So वो श्लोका, if you have the mobile में है आपके पास? It is Antya Leela, chapter 6. रघुनाथ दास गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि what is the duty of the person in the renounced order? Actually, we will start from 220, 220 number. 220. Everybody could get? Ashok Gaur Prabhu? आपके मोबाइल में है? But it doesn't have, we can use one. Please repeat. हमारे हिंदी ग्रुप में भी अंत्य लीला अध्याय 6 कल भेजा गया था. उसी का 200 नंबर श्लोक आप खोल सकते हैं. 220, 220. वहां पे पीडीएफ कल भेजा था ना? पीडीएफ इज. Please repeat after me. Mahaprabhu Bhakta Ganera Vairagya Pradhana Jaha dekhi priti hai Gaura Bhagavana. Renunciation is a basic principle sustaining the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Seeing this renunciation, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, is extremely satisfied. See, Prabhupada uses the word extremely satisfied, not just satisfied. क्या भगवान को चैतन्य महाप्रभु को सबसे प्रिय क्या है? वैराग्य है. और उसको देखकर भगवान खुश होते हैं. तो आप गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य, थोड़ा वैराग्य बढ़ाना चाहिए. वैराग्य से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते. नॉट शुष्क वैराग्य, बट युक्त वैराग्य. मतलब भगवान को जो चीजें ऐसे, अभी मेरे पास लैपटॉप है, मैं सेवा में यूज कर रहा हूँ, उसको उठा के पानीहाटी फेस्टिवल कावेरी में डाल दिया 11 तारीख को, दैट इज नॉट प्रॉपर. यू आर यूजिंग इन कृष्णा सर्विस. बट जो चीजें नहीं जरूरी है उसको त्याग देना. जैसे अभी ओवर ईटिंग हैबिट है. आज मैं, if you tell your faults publicly, Krishna removes them. Like my habit is to eat sometimes more than necessary. तो वो उसको हम त्याग कर सकते हैं. समटाइम्स वो बोलते हैं प्रभु ये क्या करें, इसने ज्यादा डाल दी है तो वेस्ट हो रहा है. बट बेटर नॉट टू टेक स्टिल, because यहाँ भी वेस्ट होना है. And actually overeating causes many diseases.
because the body, the food remains, it's not cycled properly. And another renunciation is renouncing the false ego. That is most difficult. मिथ्या अहंकार. जैसे एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे, इट्स इजी टू डाई द क्लोथ्स. सैफरन बनाना बहुत इजी है, आप व्हाइट को डालो 2 घंटे में सैफरन होता है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाई द फॉल्स ईगो. फॉल्स ईगो शुड डाई, देन यू विल गेट द रियल डाई. अहंकार को त्याग करना. विषय छाड़िया, बोलिए, सेरा से मजिया, मुखे बोलो हरे हर. विषय को त्याग करके बोलना है हरि. नेक्स्ट वर्स, प्रभु रे 221 नंबर. प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद न लया, रात्रि सिंह द्वारे खड़ा है मागी खाया. Govinda said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das no longer takes prasadam here. Now he stands at the Sinha Dwar where he begs some alms to eat. वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, कोई देगा, कोई बोलेगा अरे ये मेरा थोड़ा सा खीर ज्यादा था, ले लो. भिक्षा के लोग क्या देंगे, एक्स्ट्रा का वही देंगे. कोई बहुत कम है जो पैसा लेके खरीदी करके देंगे, है ना. He's begging, yes, whatever comes. शुनि तुष्ट है प्रभु कही ते लागिला, भाला कैला वैराग्य धर्म आचार्यला. And we say, Prabhu, you can just put the mobile there so he can also read all three. It will be easy. अच्छा, आप बंगाली में थे, आपको तो डायरेक्ट बंगाली आता है. That is very good. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he was greatly satisfied. Raghunath Das has done well. He has acted suitably for a person in the renounced order. Renounced जो वैरागी है, उसके प्रति ये ड्यूटी ये बेस्ट है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है. कभी हम भी डिमांड करते हैं, मेरा भी फॉर हेल्थ रीजन समटाइम्स आई वांट दिस सूप, आई वांट दिस वेजिटेबल. वी कैन रिक्वेस्ट बट वी शुड नॉट डिमांड. Vairagi means whatever comes. If you are really a sannyasi, you should not demand anything. Like Sri Sampradaya, one I heard, I do not know which one of the acharyas says, that sannyasi means you should not know where the next meal will come from. You should just be wandering. And from somewhere somebody says, here is some pongal. Somebody says, here's some kheer. Like Madhavendra Puri. Madhavendra Puri never put a WhatsApp message. Please keep some kheer ready for me. I want to put in Chaitanya Charitamrita that you are bringing kheer for me. ऐसे नहीं कि पूरा प्लानिंग अपने आप से. दिस वैराग्य. वैरागी को रिपे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाइया करे जीवन रक्षण. A person in the renounced order should always chant the holy name of the Lord. He should beg some alms to eat and he should sustain his life in that way. बस थोड़ा सा भिक्षा मांग लिया. उसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं. हाईएस्ट लेवल इज नॉट टू आस्क. हाईएस्ट लेवल माधवेंद्र पुरी का था, पूछना ही नहीं. उससे लोअर लेवल है कि मांग लेना. उससे भी लोअर लेवल है कि टेम्पल में जो बना है वो खा लेना. उससे भी लोअर लेवल है कि घर में जो है आपको जो अच्छा लगे वो भगवान को भोग लगाना और बोलना मेरे डीटीज को अच्छा लगता है. माय डीटीज लाइक इडली बिकॉज आई लाइक इडली. Well, they have no choice, you know. So, and even lower than that is to eat anywhere, even if it is unoffered, and even but vegetarian. Even lower is to eat non-vegetarian. That of course is ruled out. So we should try to gradually come. At our level, is best to eat whatever is cooked in the temple. वो अच्छा रहता है, economical भी होता है. At least Saturday, Sunday temple में लेना. It's a very good. That way you save a lot of time in cooking, and you can attend class. You know, that's very good policy here. That whoever comes to the class, that they can take prasad. The devotees also save time. Because actually, if you cook for family, 5 people, and you cook for 50 people, the amount of effort for 50 people may be double or 3 times. But the saving is more. 5 ke liye 10 times cooking, and 50 ke liye once cooking. So save a lot of fuel and the previous ages we find in the holy place like Sri Rangam, Tirupati. The Anna Kshetras would be there. Even now also again in TTD they have free prasadam. And our one devotee, Radhapati Gopinath Prabhu,
very wonderful disciple of Jayapatak Swami Maharaj in Mayapur. He has initiated under the guidance of Shri Jayapatak Maharaj free prasad. Mayapur में कभी भी आप जाओ free prasad, morning 9 to evening 9. मैंने बोला उसके पहले मंगल आरती में आए तो बोले उतना भूखा हो तो फिर वो हरे कृष्णा, he can drink water. But morning 9 to 11:30 khichdi prasad or sometimes idli, and 11:30 to 1 rice dal sabji full. Then again evening also. And I was asking him, okay, how do you finance? Well, just Krishna is giving. Krishna is giving. Actually, when we are thinking about money now, we are becoming a penny wise and pound foolish. हमको लग रहा है सोचने पैसा कहाँ से आएगा. Like, when Prabhupada was talking about Radha Madhav temple, TOP, big temple, so Bhavanand Prabhu said, Prabhupada, where will the money come from? Prabhupada said, what is this always money, money, money? You don't know. Radha Madhav will give money. Radha Madhav will give. It's like now a new temple has come up because all of you are chanting nicely and serving sincerely. Lord Jagannath is giving. The complete hoegi, almost completed. And even if need be, he can give more. At one moment, Raghunath Das ka fundraising kya tha? The poster bhi nahi banaya. Lord send it. And he got a snapshot of the transaction. Yes. Krishna gives everything. So next verse is important. Actually, I will read the purport of this, a very important purpose. Vairagi Karibe Sadams. The purport bataya gaya. As stated in Hari Bhakti Vilas, Krityanti, I'll just read the translation. A well-to-do householder cannot live like a person in the renounced order, completely take shelter of the holy name. Such a householder should chant the holy name in the morning, at midday, and in evening, then be able to cross the ocean of science. Persons announced in the renounced order should chant the holy name with great faith and love, always think of the lotus feet. They should have no other occupation other than chanting the holy name. So, यहाँ पे in next same purport continued. Srimad Bhagavatam's opinion, the process of deity worship is not actually necessary. Just specific prescriptions of the Pancharatra do not have to be followed. The Bhagavatam enjoins that even without practicing deity worship, one can achieve the complete success by any of the other devotional processes, such as simply offering at the lotus feet of the Lord. यहाँ पे गृहस्थ और सन्यासी में अंतर बताया. गृहस्थ को सुबह, दोपहर और शाम को जप करना चाहिए और सन्यासी को हमेशा जप करना चाहिए. कभी यहाँ लिखे ना सन्यासी को हमेशा करना चाहिए, तो लगे गृहस्थ को सुबह करना चाहिए. प्रभुपाद बहुत स्मार्ट है. If you are not sannyasi, you should chant morning, afternoon, evening. ब्रह्मचारी should chant always. हमारे तो ब्रह्मचारी भी morning, afternoon, evening नहीं करते. Morning chant करके बीट बैग को लॉक करना है, अगले दिन सुबह 4 बजे खोलना है. But गृहस्थ should chant morning, afternoon, evening. That means brahmachari should also chant like at least one round afternoon, evening. Habit बन जाना चाहिए. जैसे smokers होते हैं, उसको कोई restriction नहीं होता. He wants to smoke all the day. So we go on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Next verse, 224, 224. Vairagi haya jeba kare parapeksha. कार्य सिद्धि नाही कृष्ण करे न उपेक्षा. A vairagi should not depend on others. If he does so, he'll be unsuccessful, neglected by Krishna. कभी हमारा डिपेंडेंस आ जाता है. ऐसे मेरे ब्रह्मचारी को जाता है, प्रभु जी वो डिवोटी कार लाएंगे तो ही मैं जा सकता हूँ, वो डिवोटी अगर डोनेशन देंगे तो ही मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ. प्रैक्टिकली वी मे टेक हेल्प, बट डिपेंडेंसी शुड बी ऑन कृष्णा. कृष्णा चाहेंगे तो बिना कार के भी हम पहुंच जाएंगे. कृष्ण चाहेंगे तो कार आ जाएगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी. कृष्ण चाहेंगे तो something can happen. So we should have faith in Krishna, not in material arrangements. Because if he becomes dependent on anything other than Krishna, then Krishna is not pleased. To the degree we depend on Krishna, to that degree we receive mercy. Itna Krishna par dependency hai. Vairagi hai kare jivera lalasa. Paramartha jai ara hai rasera vasha. If a renunciate is eager for his tongue to taste different foods, his spiritual life will be lost and he becomes subservient to the taste of his tongue. अगर वैरागी सोचते हैं अरे ये प्रोग्राम अच्छा है, यहाँ पर गरम गरम पूरी और छोला भटूरा मिलता है,
ये उतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ खिचड़ी मिलता है, वो अच्छा है, खिचड़ी मिलता है लेकिन स्पाइस के साथ होता है, उसमें थोड़ा सब्जी भी होता है, लाइक दैट वी बिकम सब सर्वेंट। जीवेरे लालसा जे युति युति दाय शिष्णुदर परायण, इट्स गोइंग टू कम एक्चुअली, सॉरी। वैरागीर कृत्य 226, वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरना। The duty of a person in the renounced order is to chant the Hare Krishna mantra always. भगवान का नाम लेना है, कभी 16 माला या 32 कितना लिखा है, सदा कीर्तनीय सदा। He should satisfy his belly with whatever vegetables, leaves, fruits and roots are available. This is very high standard. If you can do it's good, but whatever standard, whatever available, जो भी मिल जाए, no arrangement. Of course, ultimately वही मिलना है जो भगवान करते हैं, आप करोगे भी अरेंजमेंट तो भी, लेकिन फिर भी गृहस्थ और सन्यासी मंत्र के, गृहस्थ करते हैं लेकिन जानते हैं कि मैं नहीं कर रहा, और सन्यासी करते ही नहीं है प्रयास, है ना। सन्यासी मीन्स he should not endeavor for any material things for his personal maintenance. कृष्ण विल के जीवेर लालसा जय इति उति धाया, शिष्णुदर परायण कृष्ण नाही पाया। One who is subservient to the tongue and thus goes here and there, devoted to the genitals and the belly, cannot attain Krishna. जो इंद्रियों का दास है, गोदास, वो कृष्णदास नहीं बन सकते। कभी ड्यूटी सोचते हैं गोस्वामी तो खाली सन्यासी के लिए बोला, गोस्वामी एक्चुअली गृहस्थ को भी गोस्वामी बनना चाहिए। गो मतलब क्या है, इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना। नेक्स्ट वर्स, इज इट ओके स्पीड, शुड आई इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड, इज इट, आर यू एबल टू फॉलो? समझ में आ रहा? आरदिन रघुनाथ स्वरूप स्थारने, आपने कृत्य लागी कैला निवेदने। The next day Raghunath Das inquired at the lotus feet of Sarup Damodar about his duty. तो पूछा मेरा ड्यूटी क्या है? की लागी छाड़ी ला घर न जाने उद्देश्य, की मोरा कर्तव्य प्रभु कर उपदेश। I do not know why I have given up household life. What is my duty? Kindly give me instructions. कौन पूछ रहा है प्रश्न? रघुनाथ। मेरा क्या कर्तव्य, मैंने घर तो छोड़ दिया, सन्यासी कर्तव्य क्या है? प्रभु आगे कथा मात्र न कहे रघुनाथ, स्वरूप गोविंद द्वारा कहे निज बात। Raghunath Das never spoke a word before the Lord. Instead, he informed the Lord of his desires through Sarup Damodar Goswami and through Govind. Etiquette है, और डायरेक्टली नहीं बोलते थे, कुछ पूछना होगा ना, प्रभु आप पूछिए भगवान से। यहाँ भी इसकॉन में एटिकेट है कि मुझे कोई जीबीसी से बात करना है, टेम्पल अथॉरिटी से बात करें, टेम्पल प्रेसिडेंट से करें, दैट एटिकेट शुड बी फॉलोड। इवन तो हमको लगेगा कि नहीं मैनेजमेंट डिसीजन ठीक नहीं है, तो भी संस्था में रह रहे हैं इसलिए फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वर्स, प्रभु आगे स्वरूप निवेदिला आराधना, रघुनाथ निवेदिया प्रभु चरणे। The next day, Sarup Damodar Goswami submitted to Lord Chaitanya Mahaprabhu and said, Raghunath Das has this to say at your lotus feet. ये कौन बोल रहे हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं, रघुनाथ का एक निवेदन है। वो क्या निवेदन है? कि मोरा कर्तव्य मुन्न न जानी उद्देश्य, आपने श्री मुखे मोरा कर उपदेश। I do not know my duty or the goal of my life. Therefore, please personally give me instruction from your transcendental mouth. मेरे को पता नहीं मेरा क्या कर्तव्य है, आप बताइए। You know how Mahaprabhu is dealing. Mahaprabhu ये नहीं बोलते मेरे पास है वेरी गुड, स्वरूप को क्या मालूम, तो चिल्लर भक्त है, मैं उसको इस्कॉन में लेके आया था, धोती पहना मैंने ही सिखाया। महाप्रभु क्या बोलते हैं, अरे यू शुड आस्क स्वरूप दामोदर नोज बेटर देन मी। अभी स्वरूप दामोदर इज लाइक डिसाइपल ऑफ महाप्रभु, वो बोले ही नोज बेटर, उनको ज्यादा अच्छा मालूम है। भक्तिनाथ ठाकुर जब लेक्चर देते थे ना, तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज सुनने आते थे, एंड ही वुड स्माइल एंड से, सी माय प्रभु इज स्पीकिंग सो नाइसली।
मेरे प्रभु हंस रहे, वे नहीं बोलते अरे तू कहां से लेक्चर दे रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, नीचे उतर जा. वेरी हैप्पी. Shukdev Goswami is speaking Bhagavatam, and who is hearing? Narad Muni. Vyasdev is hearing. You know? This is non-enviousness. Nirmatsa. What is Lord's reply? Hasi Mahaprabhu Raghunathe Kahila. Tomara Upadesha Kari Swarupera Dila. Smiling Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das, I have already appointed Sarup Damodar Goswami as your instructor. आपके शिक्षक कौन है? स्वरूप दामोदर. साध्य साधन तत्व शिखा इहर स्थाने, आमी तात नहीं जाने इहो यत जाने. You may learn from him what your duty is and how to discharge it. I do not know as much as he. मतलब मेरे को भी उतना नहीं मालूम जितना किसको मालूम है? स्वरूप दामोदर. तथापि हमारा आज्ञा श्रद्धा यदि हया, हमारे ए वाक्य तबे करिह निश्चय. Nevertheless, if you want to take instruction from me with faith and love, you may ascertain your duties from the following words. मतलब कहते हैं कभी कभी हम एक व्यक्ति से लेना चाहते हैं, इसको लेने दूसरों को नहीं मालूम, ऐसा नहीं है. हमारा श्रद्धा एक में ज्यादा होता है और हर एक इंडिविजुअल है. किसी का एक गुरु में ज्यादा होता है, किसी का दूसरे में होता है. हम कुछ ना जा रहे प्रभु जी ये मेरे गुरु ही बेस्ट है, यहाँ पे क्यों जा रहे दूसरे के पास. हर एक को भगवान अलग अलग रूप से इंस्पायर करते हैं. यू नो दैट स्टोरी द 24 गुरुस है ना, भागवत में आता है 11th कैंटो में. that Brahmana, हाँ अवधूत ब्राह्मण, he was learning from everybody. और एक से दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे से नहीं सुन सकते. इसको हम एक फैमिली स्ट्रक्चर है. जैसे फादर होते हैं, अंकल होते हैं. समटाइम्स फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, अंकल इज हेल्पिंग. फादर passes away, then uncle takes the role of father. You know, so we should always be. That's why Prabhupada created this society, a house in which the whole world can stay. First, at least locally, we should learn to stay. Then we can encourage even non-devotees. Okay, next verse. Sadhya sadhana tattva shika iha sthane. Correct, na? 236. Oh, we finished this one. Gramya katha na shunibe, gramya varta na kahibe. Bhalana khaibe ar bhalana paribe. Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should dress very nicely. ज्यादा टेस्टी प्रसाद मत खाओ, ज्यादा ऑपलेंट कपड़े पहनो और संसारी बातें मत करो, सुनो भी नहीं. क्योंकि प्रभु जी ये डिवोटी क्रिटिसाइज कर रहे थे और वो सीनियर हैं, मैं नम्रता से सुन रहा था, है ना. कोई बात नहीं, ये कोई सीनियर भी हो तो प्रणाम करो. कोई स्टूल पास कर रहे तो सीनियर भी हम पास में नहीं जाते, है ना. वी डोंट से सीनियर है, वी लेट मी get the cent, you know. That's a very crude example, you know. So let him do whatever he wants. If you cannot change him, no problem, but at least we should not get. कई बार होता है ISKCON में कई डिवोटीज होते हैं सीनियर है लेकिन एडवांस नहीं है. एक्चुअली एडवांस है, कभी निंदा करेगा ही नहीं, वो ग्राम्य कथा करेगा ही नहीं. रघुनाथ दास इतने एडवांस है, प्रसाद भी खाते हैं ना तो कंडेम करते हो, ये 5-6 मिनट प्रसाद खाने में गए, हम इतना समय एक माला और हो सकता था. जैसे आप भी अभी 9:45 हुआ है, 10 बजे वापस बुलाया है, नहीं 10 मिनट में आप प्रसाद लेके आ जाएंगे, नहीं आप प्रसाद खा. आई होप सो. आप प्रसाद खा जाएंगे, प्रभु जी व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, मे बी लंच डायरेक्ट ले लेंगे, यू नो. आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट इफ यू कैन डू वेरी नाइस, टेक सम फ्रूट्स, टेक सम. जैसे हम IIT में एंट्रेंस एग्जाम के समय, मैं भी उन मूर्खों में से था जो IIT में एंट्रेंस एग्जाम में आई वुड स्टडी. They one guide, JEE बोलते हैं ना. That anybody studied in IIT? Anybody? You studied? You must have passed JEE, ना? Master, GATE किया होगा ना आपने? Yes, GATE. You prepared for GATE? Yes. हमारे इसमें JEE में तो इतना competition. Then I was at that my time after 11th also you could appear. I passed in 11th only. So I would just morning to evening book मेरे साथ. Breakfast भी लेता. ध्यान स्तुवंस्त यस्य त्रिसन. ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर में करके बेड के बाद में सो जाता. रात को नींद खुला तो भी पढ़ता था. इट वाज सो मच.
ऐसा हमारा होली नेम से अटैचमेंट होना चाहिए, उतना उतना अटैचमेंट आना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब भी टाइम मिले हरे कृष्ण। अव्यर्थ काल, ऑफ कोर्स आई एम नॉट saying 10 minutes, but come after half an hour whenever you can. But or if you have to go to home, कुछ माताओं को घर जाना, घर में जब करे, जैसे our I was glorifying you yesterday, Venkat Raman Prabhu. I think you were attending offline yesterday. That after you came, after मैंने जब बोला प्रभु जी को कि अभी 64 माला पूरा हो गया, सब अपने घर में जाओ, तो प्रभु जी घर में जाके 64 किए। जिन लोग घर में जाने का मीनिंग क्या होता है? VRS हो गया अभी, नहीं? That's enough. You could do. I'm saying not for, I know you may not like, but just for encouraging others. 64 फिर 64 दो बार कर. Let us congratulate Prabhuji. Hari Bol. And Prabhuji actually told me not to tell anybody, but I'm saying just so that people feel inspired. It's not impossible. कहते नहीं प्रभु जी आप ब्रह्मचारी के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग बेकार नहीं, हमारे पास कार भी है ना? आप तो बेकार हैं, आप जब कर सकते हैं ना? But I felt so inspired. That's how I agreed कि कल कार्यक्रम रखना है ना. Yeah, we speak only about Harinam Chintamani, holy name, for the most sincere, or not a general crowd, not newcomers, but see, मतलब क्या है ना, मैंने देखा भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, 10 बच्चे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ब्रह्मचारी थे। भक्ति ठाकुर डायरेक्टली बोलते थे ब्रह्मचारी बनो। भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि कलयुग में गृहस्थ आश्रम ज्यादा सेफ है। अभी आप किसके फॉलोअर हो? आप दोनों को फॉलो करें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ब्रह्मचारी बनना है तो बोलो भक्ति ठाकुर की जय, गृहस्थ बनना है तो बोलो भक्ति ठाकुर की जय, और दोनों की जय बोलना है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल है, इन गृहस्थ लाइफ ही वाज चैंटिंग 64 राउंड्स एंड डूइंग 8 hours ड्यूटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो नित्य सेवा से प्रसाद खाते थे ना, ही वाज अर्निंग हिज लाइवलीहुड ऑल्सो टू रेज 10 चिल्ड्रन। इज, आप में से कोई है जिसके 10 चिल्ड्रन हैं? मे बी 20-50 years बैक ऐसा होता था। लाइक माय मदर्स साइड, व्हेन शी वाज बोर्न, दे वुड हैव चिल्ड्रन 6, 8, 10, बट नाउअडेज इट्स मैक्सिमम 2 or 3, दैट इज इनफ टू कीप यू बिजी, एक बच्चे को बड़ा करना यानी एक like a lifetime, 20 years at least, and we should do our best, and then of course whatever Krishna wants. एक बार मैं बता रहा था कहानी, एक डिवोटी बोल रहे थे प्रभु जी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ बच्चों के लिए, पता नहीं ऐसा नहीं हो कि प्रहलाद की जगह हिरण्यकशिपु तो नहीं पैदा हो गए? कोई बात नहीं, even if हिरण्यकशिपु, you will get purified. You try. If you don't try, then the mother father gets bad karma for not trying to raise children in a Krishna conscious. After trying, if they don't become devotees, that is their choice. Okay, we come to last 5 verses left. We have 10 minutes and 5 verses. Our next, bhalana khaiba, means not eating opulent food. It should be nice food, fresh food, juicy, succulent and nutritious. Tasty food होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे जैसे हम लोग बहुत टेस्टी प्रोडक्ट, जैसे that is good for guest, like Rajbhog Prasad. Sometimes we can honor one little spoon, but it's good for newcomers, अपने हमारे लिए simple. And health point of view से भी, first Prabhuji took me to a doctor, Prasanna Prabhu. First thing he will give is stop eating so many spicy foods, nahin? Green chili one, even maida, suji, So, actually what I feel is that if one eats many spicy and tasty foods, then it's one good thing is that the Ayurvedic doctors get many customers, but after going there, they have to stop. Better to stop before only. And there are 2 ways. Prevention is better than cure. First is to let the car run on an area where there is a lot of thorns and then go to a tire repairer, or to not take that road at all. So if you take this bhalana khaiba, even from the Ayurvedic point of view, you will be benefited. Health point of view से भी, कि बहुत कम लोगों को बीमारी होती है क्योंकि सिंपल खिचड़ी खा लिया या सूप पी लिया, या चक्कर आ गए क्योंकि पोंगल खा लिया. Generally it happens because of heavy food. And bhalana pori, but dress, brahmachari के the same dress. Grahasth भी, Mataji's भी, they can have variety but not very opulent, simple. Yes, I'm happy. गृहस्थ आश्रम में तो प्रभु जी से तो अच्छा ही है कि धोती कुर्ते है, उसमें और क्या करेंगे ना, कुर्ते को तो बटन एक्स्ट्रा लगा देंगे या पीछे बटन. What more can you do? It's so simple, and it saves time also, है ना? It saves time, it saves energy, it saves money. Okay,
अमानी मान दहे कृष्ण नाम सदा लबे व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिबे. Do not expect honor, but offer all respect to others. Always chant the holy name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. And within your mind, render service to Radha and Krishna in Vrindavan. हिंदी में है, मान की इच्छा मत करो, दूसरों को मान दो, मन में राधा कृष्ण की सेवा करो. And purport, Bhaktivinoda Thakur says in Amrit Prabha Bhashya, men and women are married, they beget children, and are thus entangled in family life. Talk concerning family life is called Gramya Katha. A person in the renounced order should never indulge in either hearing or talking about such subjects. He should not eat palatable dishes that is unfit for a person in the renounced order. Should show all respect to others, should not expect respect. In this way, we can chant the holy name, think of how to serve Radha. एक अच्छा पॉइंट बोला है कि ये ग्राम्य कथा फैमिली कथा भी होता है, फैमिली मेंटेनेंस. गृहस्थ लाइफ में थोड़ा अलाउड है, सोचना पड़ता है बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, कौन से कॉलेज में डालना है, शुड स्टडी नाइसली, बट सन्यासी शुड नॉट गो इनटू सच टॉपिक्स. और ग्राम्य कथा का मतलब है फॉल्ट फाइंडिंग भी होता है, कभी कभी हम फॉल्ट फाइंडिंग में लग जाते हैं. कोई डिवोटी का प्रॉब्लम भी हो, मैनेजमेंट को डील करने दो, अपने को उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. एते संक्षिपामि कहिलो उपदेश स्वरूपे रठाई इहर पाइबे विशेष. I have briefly given you my instruction. Now you will get all details from श्रील स्वरूपधाम. मैंने शॉर्ट में बताया, डिटेल में कौन बताएगा? स्वरूपधाम. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, does not expect personal honor, but is always prepared to give respect to others, can easily chant the holy name. So Lord Chaitanya concludes the entire conversation by saying, Trinadapi Sunichet, most important verse. Like last time also I ended the lecture with this. ये वर्ष को याद रखना है, अपने आप को छोटा समझना. कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं लेकिन सोचते नहीं. Who is speaking? I am your servant. Probably please get some prasadam ready for the guests. They are coming and clean the shoe rack. तेरे बाप का नौकर नहीं हूं. आपने बोला मैं सेवक हूं, वो तो मेरी नम्रता है. Don't take undue advantage of my humility. But to become humble, we have to be willing to do this. That's why preaching is very important. Preaching, book distribution से ना humble बनना ही पड़ता है. या temple construction के लिए भी donation लेने आते तो humble बनना ही पड़ता है. And next is more tolerant than a tree. Tree पे लोग कई बार पानी भी नहीं देते, सूख जाता है, मांगता नहीं है. Somebody gives water, he will accept. अब पेड़ को लोग काटने आते हैं, तो पेड़ काटने वाले को फल देता है, उसके नीचे सो जाता है, फिर अगले दिन फिर काटता है. That is the example of Haridas Thakur. Bhaktivinoda Thakur said we should desire the worst, the best good for the worst enemy. But कभी devotee में ऐसा clash होता है, तो we may want to on a managerial level थोड़ा अलग रह सकते हैं, लेकिन offend नहीं करना चाहिए कि वो भी भगवान के वैष्णव भक्त हैं. अमानी न मान देने, सबको मान दे. एंड फाइनली एता शुनि रघुनाथ वंदिल चरण महाप्रभु कैला तारे कृपा आलिंगन. Hearing this, Raghunath Das offered prayers at the lotus feet of Mahaprabhu. The Lord, out of great mercy, embraced him. The prayer ki. And then finally, Puna samarpila tara sarupe rasthane अंतरंग सेवा करे स्वरूपे रसंगे. Chaitanya Mahaprabhu entrusted him to Sarup Damodar. Raghunath Das rendered very confidential service with Sarup Damodar. Chaitanya ने किसको दे दिया? Sarup Damodar को. कि Sarup Damodar ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा नौकर है, he will serve you. And he will end with the purport. Antaranga Seva refers to service performed in one's, what is written? Spiritual body. Sarup Damodar is formerly Lalita Sakhi. And Raghunath Das Goswami is Rathi Manjari. So he is also being to serve Radha and Krishna with. So ये तरीका है. 4 minutes left. We can do a just short kirtan for our Prabhuji. Swarna Gaurhari Prabhu is going through some health crisis. And also one more devotee in Pune. We can pray for them. We'll end with a small kirtan. Before that,
one question. Jaydev Prabhu from our... Jaydev Prabhu is asking a question. Prabhuji, you mentioned that Krishna has planned for all Jivatmas. How does one know if he is actually following his plan? Very good question. What can we do to ensure that we are following? प्रभु जी का क्वेश्चन है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा भगवान का प्लान फॉलो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? Actually, whether you want it or not, ultimately you will have to follow. The question is whether you follow willingly or grudgingly. अभी कृष्ण का प्लान है, अभी मेरे को इच्छा हो रही है कि मुझे खीर पकोड़ा मिले, बट कृष्ण का प्लान है सिंपल मिले, तो भी स्वीकार करना. From our side, we know what Krishna wants us to do from the Shastras and Guru. Guru sadhu bolte hain simple जीवन बिताओ. And if you follow that, we will make advancement. If you do not follow also, then there will be some suffering, and that suffering will make us follow. On a practical level, sometimes we make plan to do some service. We try our best. If we try our best, then we have done our duty. उसके बाद जो हो भगवान के हाथ में. But we should try at least. We should not say it was not Krishna, it was Krishna's plan. जैसे एक बार एक डिवोटी ने क्या किया, चरणामृत में नमक डाल दिया. Prabhupada tasted, said, who did this? Then Mataji said, Krishna's plan. Krishna ka plan. Prabhupada बोले, your nonsense. So we should try our best also. It's not that being a puppet means we don't try. Like I'm trying to speak as properly as possible. We be patient. We try to serve. We try to cooperate. But still, sometimes Krishna's plan are different. Pandavas tried, but sometimes in the battlefield, even the Pandavas lost. One of the time they did not lose the war, but they lost the battle. Then again they won. So Krishna's plan means whatever is revealed through devotees and Guru, through Prabhupada's books. And whatever we can follow, we follow. Whatever we cannot follow, we accept it. That is also Krishna's plan. Would like to add anything? मतलब हम अपना पूरा प्रयास करें जो शास्त्रों में लिखा है वैसे हो, फिर भी जैसे अभी कोई डिवोटी तो पूरा प्रयास करता है, फिर फॉल डाउन हो जाता है, फिर भी कृष्णा का प्लान समझ. Okay, any comments? Any devotee would like to comment? Yeah, प्रश्न. You see, ultimately, even karma is part of Krishna's plan. Krishna's plans are according to karma. जैसे अभी आपके कर्म में है कि आपको बीमारी होनी है, so that will come. But if you are devotee of Krishna, Krishna may minimize that suffering, or he may give you strength to tolerate. आपके कर्मों में था दुख आना है, अगर आप डिवोटी नहीं होते तो भी दुख होता है, लेकिन डिवोटी होने से आपको समझ आ रहा है कि कृष्ण का प्लान है. और नॉन डिवोटी तो बहुत गुस्सा होके गाली देते, आत्महत्या करते, सुसाइड, डिप्रेस्ड, है ना. बट डिवोटी जानते हैं कि दिस इज कमिंग आउट टू माय कर्मा, बट कृष्णा इज सैंक्शनिंग दैट कर्मा. कृष्णा वांट ही कैन रिड्यूस द कर्मा आल्सो. कितना सैंक्शन करना है, कितना रिड्यूस करना है, भगवान जानते. सो ही इज माय वेल विशर. वी शुड हैव फेथ. व्हेन यू हैव सरेंडर्ड टू कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर. मां शुच है, कृष्ण रक्षक. एक बार प्लेन में बैठ गए ना, तो प्लेन ऐसे जा रहे हैं, मेरे को इधर जाना है, कलकत्ता इधर है, लेकिन कृष्णा पायलट जानते हैं कि इधर से होके जाना है, तो बीच में इसको डिस्टर्ब मत करो. करने से फायदा है क्या, कॉकपिट में जा ही नहीं सकते. एनीवे व्हेन द पायलट टेक्स ऑफ, you don't have control. So either you can smile and accept, or you can just go and bang the door and beat your head. So whatever is happening is Krishna is in control. So either you say willingly or unwillingly, thy will be done. आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा. मेटेरियलिस्ट क्या बोलते हैं कि मेरी इच्छा को कृष्ण की इच्छा होनी चाहिए. स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं कि कृष्ण की इच्छा मेरी हो जाए. Okay, any Mataji like to ask something or speak something? Okay, we'll have 2 minutes left, Kirtan. Already 10 o'clock, but we'll sit and please chant in a prayerful mood with folded hands. Keep looking at Lord Jagannath praying. Mridanga playing. Let it be. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Please,
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrin. Loudly please. Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, ಪುಟ್ಟನ Rama ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತೇನಕ್ಕೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. No, that's what ladies, they feel it's very far. Even in my friends, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. My friends this thing, no? Gauranga, Hari They Bol. also say that it is very far. One man is ready to come and do the housework. ಹ್ಮ್ Hare Krishna, today he said he'll bring him by Hare 3 o'clock. Krishna, One Krishna of my Krishna, devotees, Hare old Hare, man. Hare So he Rama, said, today anyways, I'll also see the house. I'll come to know where it Rama is, Rama, so that I can Hare tell others. Hare, And I'll bring this fellow also. You Hare. see, once you talk to him, he said 3 o'clock, you'll be at home, no? ಇರ್ತೀರಾ? ಅವನು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ. ಅವನಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, ನಾನ್ Hare ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ. 3 Hare, ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ Hare ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Rama, ಅಪ್ಪನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು Hare blessing ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು Rama, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ Rama ಒಂದು Rama, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು Hare Hare. ಈ ಕಡೆಗೆ. Gauranga. He is ready to come. He has no problem. Hare So I asked how Krishna, he said no, Hare no, it's very good. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, He's trying, Papa. Hare That's why he is giving us an option. See once. Hare Bol. Even ladies are strangers only. Is it not?
I don't know. She will come in the bike and go. Anyway, let her come. Let Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Last time. ಬಸ್ ಅಮ್ಮ ಕೆಳಗ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಾದಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೋಗು. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಾ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Gauranitai, 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 Gauranitai. Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Subhadramai, Jai Sudarshana. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय, जगन्नाथ भगवान की जय. एक बार raise your hand, loudly chant जय जय श्री राधे. जोर से जय जय श्री राधे. लास्ट टाइम जय जय श्री राधे. Radheshan Prabhu got the message, so he's coming. Thank you. You have made me happy. For those who possible, not compulsory, it's already 10, so 10:30 to 12:30. 12:30 I have to leave also. So those who are free, you can join Japa free of charge. And those who do Japa, they can join for lunch also at some Rajbhog, one drone we can give to everybody. Last time we got, na? Trust. We can distribute little. Swayam Prakash Prabhu. He is very udar. He will give his quota also to everybody. Thank you. Forgive me for being little pushy. My nature is like that, but it is been dotted in a good direction. Otherwise, I would have pushed you for money, for material things. I am pushing you for spiritual things. That is yes. It may be a little painful, but when you go back to God, you will thank me and you will pull me out. I will still be in material world. Huh? He is Lakshmipati. Thank you. Prasad will be there. Then prayers वहीं बोल देंगे. Valid. Huh? Outside. We can say now. Mahaprasad. As for 2 minutes. Mahaprasadi Govinde. Namo Brahm. We can say it together. Namo Brahmani Vaishnave Swalpa Punya Vritam Raj Vishwasana Vajayate Sharira Vidyaja Jadendriya Taheka
जीवे फेले विषय सागरे तारमदे जीवाति लोभमय सडुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय कोरी बार जीव जाय स्वप्रसाद न दिलो भाई से अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम seeing your eagerness I decided new format of prasadam prayers shortest time Hare Krishna. You can even come and chant for one round and leave also. It's not that you stay till 12:30, but chant. Or if you're going back to your home, you can chant at home also. But Saturday, Sunday, try to do extra rounds. That is a good practice. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prasadam is arranged outside in the courtyard. Devotees can honor Prasadam. Hare Krishna. आवाज ठीक था आज इसमें YouTube पे कौन बोले श्रीराम प्रभु हाँ क्या